Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, as I have been talking about different activities, I have been talking about activity calendar, academic calendar, different visible thinking routines, active learning strategies, multilingualism, number of things we have discussed on our channel. So, my lovely educators, as you know, we have to engage our students in different art integrated activities. I have already talked about art integrated project also. Art integrated project जो हमें बच्चों को करवाना है, you know very well from class first to eighth, it should be subject integrated activity. क्लास फर्स्ट से लेके एट तक के जो बच्चे हैं वो एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा अलोंग विद एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म. आर्ट फॉर्म कौन सी हो सकती है? इट कैन बी विजुअल आर्ट, इट कैन बी परफॉर्मिंग आर्ट, राइट? आप कुछ भी, डांस है, ड्रामा है, माइम है, ड्राइंग है, क्राफ्ट है, आई मीन एनीथिंग दैट कैन बी integrated with that as per the subject, as per the age group of the children. So my dear educators, like from for 9th and 10th we will be having different subject wise art integrated project, but as I have explored the internet too, I could not find those kinds of examples where the children they have integrated various subject in one project. I have noticed like from class first to class 8th also the children they are doing projects, a standalone project. For example, if they are talking about sciences, they are talking about EVS or Hindi or social science, they are integrating the same with arts and they are doing one project or they are doing multiple projects. But we need to talk about arts integrated project combining different subjects, right? How we have to do it. We will be talking about this today, and we have uh, been talking about different integration activities also. But here, my lovely educators, I have taken one topic, that is plants. That is very common topic. You see, we have been teaching about plants to our children right from very early age. They are knowing about different types of plants. They are knowing about different kinds of flowers, functions of leaves, germination, dispersal, etc. So we will be taking this topic plants and we'll try to integrate it with different subjects and various art forms, right? If you have got any suggestions, don't forget to share them in the comment section below, right? So here you go, my lovely educators. So my dear educators, as I have discussed, as I have shared with you, we'll be talking about plants, how we can take this topic as integrated project. I have mentioned integrated curriculum because we will be talking about integrated curriculum too, side by side, like how we can integrate different disciplines. ठीक है, हम बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इन silos, इन compartments में पढ़ाने की बजाय we will be talking about concepts. तो we will focus on concept building. ना कि हम सोचेंगे इस चीज को मैथ्स में कैसे सोचें, इस चीज को हिंदी में कैसे सोचें और इस चीज को लैंग्वेज आर्ट्स में कैसे सोचें, एंड इस चीज के लिए अगर साइंस का कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेट करना है, वो एक खिड़की एक दरवाजा सब्जेक्ट का खोलते हैं या बंद करते नहीं जाएंगे, राइट? जैसे मैंने ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात की थी, like when we know about different languages, so we think together, we think about different concepts. Likewise, if we want to apply our knowledge in the real life situations, we need to apply our concept learning on that particular topic in that particular situation that we have learned from different subjects through our experiences. So my dear educators, you can see I have mentioned here SDG goal number 15, life on land also. So we will be integrating this topic with SDG 15 too. We'll talk about sustainable development goals with our students. Like we'll enhance their learning about these 17 global goals and they'll focus their learning about life on land too, because we are talking about plants. So here you go, my lovely educators. Now, first of all, the little children, when they got to know about plants, they talk about the different parts of the plant. उस चीज के लिए they go ahead with the role play also, right? Picture drawing, presentation, right? They talk about different parts of the plant. And in the higher classes, they talk about the seed germination also, like the journey from seed to a plant. So they can sort it out, they can arrange the same in that order, like how a plant develops from a seed, talking about the germination as per the grade level, as per their progression, as per the curriculum defined. So my dear educators, we are talking about that. So first of all, I would like to talk about the different learning outcomes that have been mentioned in the NCERT and CBSE manuals on learning outcomes on
plants, talking about plants for class 3rd, 4th, and 5th. So here you go, my dear educators. This is in front of you. It is the learning outcome for class 3. According to this, the children will be able to identify simple features that are observable: shape, color, texture, aroma of leaves, trunk, and bark of the plants in their immediate surroundings. And for that, there is a chapter 2 in the EVS NCERT book named The Plant Fairy. This is a chapter in which the children, they are understanding about the different parts of the plant. All the learning outcomes that have been defined in the NCERT manual, they will be made, they are made familiar with the different parts of the plant. They are made familiar with the different types of leaf. There is a wonderful poem also on leaves. They are learning about different colors of the leaves, different shapes of the leaf, different venations that is present in there, different kinds of leaf, right? So my dear educators, इस चैप्टर में क्या है कि एक हाइड एंड सीक और अंताक्षरी, दो गेम्स के बारे में भी बात हुई. यू कैन कनेक्ट इट विद देयर लर्निंग टू. आप अपनी क्लास में ये एक्टिविटीज करा सकते हैं. Hide and seek game, the children, they can go to the ground, they can go to the park, and they can hide, you see, behind any kind of plant and all, and they'll talk about where are they hiding and what kind of plant it is, texture, leaves, flowers, they can talk about that. And Antakshari, you can go ahead with plants related Antakshari, different flowers related Antakshari, different parts of the plant related Antakshari, to let them name as many plants, as many flowers as they can. So these kinds of activities that can be conducted, right? So my dear educators, now next is learning outcomes. Like the children, they'll be able to observe and explore the immediate surroundings, that is home, school, neighborhood, for different objects, flowers, plants, and identify different features of the objects, flowers, roots, fruits in the immediate surrounding. Now moving ahead, पहले plants के बारे में जाना, leaves के बारे में जाना. Now they're exploring more about the flowers, the function of the roots, right? Talking about the fruits and seeds, and also this is how they are learning. This is about learning outcomes for class 4. There is chapter about valley of flowers. So the children, they'll be knowing about the world of flowers. Flowers हमारे वर्ल्ड को कैसे, गार्डन को, एनवायरनमेंट को ब्यूटीफाई करते हैं. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. फ्लावर्स के यूसेस के बारे में बात कर सकते हैं. ब्लूमिंग बर्ड्स, कैसे जो बर्ड्स हैं वो ब्लूम होती हैं, right? Flowers में, right? You can talk about that also. Uses of flowers I've already said. एंड इवन कौन से जो प्लेसेस हैं वो फ्लावर्स के लिए फेमस हैं, उसको मैप के ऊपर दे कैन आइडेंटिफाई. यू कैन इंटीग्रेट सोशल साइंसेस, राइट? एंड डिफरेंट ड्राई फ्लावर्स जो हैं उस किस काम आते हैं. दे कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो. तो आर्ट्स इंटीग्रेशन कैन बी डन इन द आर्ट्स क्लास. सो माई लवली एजुकेटर्स, you need to sit with the different subject teachers who are teaching your particular class. Suppose I am the class teacher of a particular class. So I am taking sciences. I need to sit with language teachers, social sciences teachers, and mathematics teachers. I'll be talking to them like, let's sit together. And if I am taking plants topic in my class, तो आप उस plants topic से related आप अपनी क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि हम मिलाकर एक टुगेदर बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दें. हमने प्लांट्स की एग्जांपल ली, आप कोई भी टॉपिक से, वेदर से रिलेटेड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर सकते हैं, फूड से रिलेटेड कर सकते हैं. सो टेकिंग अ पर्टिकुलर topic as a base, you can elaborate as much as you want. So my dear educator, this is how you can conduct different kinds of activities in the classes. So here you go. For class 5, it describes the interdependence among animals, plants and humans. जब हमने seed की बात करी तो उसके बाद आएंगे seed dispersal पे, germination पे. तो seed dispersal के ऊपर humans और जो animals हैं, how are they helping in seed dispersals? We are talking about that. The children should be able to understand that. That is mentioned in the learning outcome. And for that, there is a chapter, seeds and seeds, right? Germination of seeds, we are talking about that. कौन से सीड्स हैं, किस सीड को कितना टाइम लगता है. आप बच्चों को एक्टिविटी भी करवा सकते हैं. दे कैन ग्रो देयर ओन सीड्स एंड दे कैन यू सी मैप ऑल्सो. दे कैन ट्रैक द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. उसको प्रॉपर नोट करेंगे, ग्रोथ चार्ट बनाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनकी इंप्रूव होती हैं, राइट? एंड दे कैन टॉक अबाउट द प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज टू. हमारे कंट्री के कौन से फेमस प्लांट्स हैं, और यू कैन टॉक अबाउट द पेयर्ड स्टेट ऑल्सो.
जैसे भी इसको आप कनेक्ट करना चाहें, दैट कैन बी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी. दे कैन शूट वीडियोस, दे कैन क्लिक पिक्चर्स, और दे कैन यूज एनी अदर आर्ट फॉर्म्स, स्लाइड शो, etc. Now, my dear educators, I have taken a few chapters from language arts from the private publisher books that, I mean, I will not name any. So there are a few chapters. Like, for example, in class 2, there is a chapter, The Banyan Tree, right? The children, they are learning about plants and sciences. So they should be connected with that. They're learning about banyan tree. अब banyan tree देखिए, इंग्लिश में आप कहीं पर भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब एक्टिविटी सब करा रहे हो, LSRW यू आर ऑलरेडी डूइंग. बट इसको कनेक्ट करिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ. banyan tree की बात हो रही है, तो ये ट्री है, right? And you can talk about little bit, you can talk about additional roots also, right? इसमें additional roots होती हैं, roots जो always science teacher ने पढ़ाया, they are under the ground. And here you can talk about there are some additional roots also, उनका function क्या है. And you can talk about some stories, I mean mythology, mythological stories that are related to this tree. You can talk about that also. Is this tree famous for something, medicinal value, is a national tree? You can talk about these concepts also. This is how you can relate the same. And life skills के साथ relate कर सकते हैं इसको. जैसे कि पिकनिक के लिए गए, ट्रीज हमें शेड देते हैं, ट्री के नीचे बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं. लाइक लोग बैठते हैं, खेलते हैं, राइट? सीनियर सिटीजन बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं पार्क में. तो कई बार क्या होता है कि खाते हैं, पीते हैं, वहां पर बैठकर काफी टाइम स्पेंड किया, एंड देन वी डोंट care for the surroundings. So related with like ourselves being responsible for the clean and green environment, उस चीज के लिए you can talk to your students also, और उसके ऊपर you can conduct debates also. So this kind of activity can be done. Now, language arts is another chapter that has been taken from class 3 lesson, Mowgli joins a wolf pack. जब मोगली की बात आ रही है, जंगल बॉय की बात आ रही है, यू कैन टॉक अबाउट जंगल, फॉरेस्ट, टेक द अपॉर्चुनिटी, आप उनको मूवी दिखाइए मोगली की, आप उसके साथ में यू कैन आस्क देम कि आप इस मूवी को देखें, एंड देन टॉक अबाउट कि आपने जंगल में क्या क्या देखा, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स आर देयर, प्लांट्स कैसे कैसे हैं, मिलता क्या क्या है उसमें से, क्या आपकी लर्निंग है, how forest is a home to different animals, right? So you can talk about different kinds of activities, different kinds of things that are related to forest. And now another one taken from class 4 and 5 respectively, magic tree is there. It's taken from class 1. The children, they are learning about magic tree, how the trees, they are magical because they give us lot many things. You can talk about what all things we get from trees. उसके लिए बच्चे गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं different things that they get from the plants. They can talk about it, अपना वीडियो शूट कर सकते हैं, घर में देखेंगे कि प्लांट से क्या क्या चीजें बनती हैं, how we are dependent upon the plants, right? They can click the pictures, they can print it, they can label it. I mean, any kind of activity as per the resources available, you can conduct the same in the classes. And likewise, you can assign like parent collaborative activity also. And then talking about trees, there is a poem too. Like trees, they are the kindest things I know. Talking about the life skills, values, we also have to be kind. हम भी दूसरों को जब दे, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करें फल की इच्छा ना करें. लाइक सो जो प्लांट्स हैं, आप उसके साथ ये रिलेट कर सकते हैं एक्टिविटी, यू कैन कंडक्ट द सेम. एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो पढ़ाया है उसको साइंस के साथ में रिलेट करें, फिर उसको सोशल साइंस में साथ, जैसे हमने बात किया कि मैप स्किल के बारे में, राइट? कि कौन से ऐसे जो स्टेट्स हैं जो फ्लावर्स के लिए फेमस हैं, राइट? सो आप इस तरीके से कहाँ पर डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, राइट? कहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, ग्रीनरी कहाँ पर ज्यादा है, फूड का प्रोडक्शन कहाँ पर ज्यादा या कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आप मैप की एक्टिविटी साथ साथ करा सकते हैं. सोशल साइंसेस, साइंसेस, इंग्लिश, वो सबको पैरेलल लेके चलेंगे. सो माय डियर एजुकेटर्स, नाउ आर्ट फॉर्म्स, लीफ आर्ट कर सकते हैं. लीफ को कटिंग करके देखिए कितना बारीकी से, ये छोटे छोटे बच्चे अगर नहीं कर सकते, बड़ी क्लासेस में यू कैन गो हेड विद दैट. एंड द लिटिल चिल्ड्रन, एज यू हैव बीन डूइंग दिस एक्टिविटी, लीफ कोलाज बना सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स का, डिफरेंट whatever they observe in the surroundings, so they can go ahead with that. Leaf ko cut karke, see there's a beautiful fairy has been made, this is a beautiful painting that has been made, so they can go ahead with that. And this is the poem that I was talking about, leaves, right? The plant fairy jo chapter hai EVS ka in class 3, from there I have taken this poem, the leaves. It talks about
different colorful leaves, different leaves that are available in different kinds of shapes also, right? So, I mean, you can ask your children, they can recite in groups, right? Or maybe silos, so they can recite this poem, they can know about different kinds of leaves. They can enhance their understanding, they can enhance their knowledge. और उस poem को कैसे बोलना है, आपकी pronunciation, intonation, proper spacing, you can talk about that also. Now, um, moving ahead, if the children, they get to know the plants, they are the producers, they produce their own food, they give us also the food. We are dependent upon the plants for various products. We already had a word about it. And now they can sort it out, whether which pictures they are from the producers group, consumers group, decomposers, as per the class, right? And they can cut the pictures, put them in their various columns, respective columns, or they can just write the names also as you want. Now, plants observation. If we talk about the critical thinking, ask your children to observe any plant that is there in the park, in the school, at home, in the surroundings, etc. And then they'll be drawing the picture. They'll be observing कि plant कैसा नजर आ रहा है, right? And then we'll be talking about the features of the plant. उसके leaves कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, रूट्स उसके पास कैसी हैं, राइट? एंड देन what is the inference that they are drawing from their observation कि ये plant कौन सी कैटेगरी का हो सकता है, इसका साइज कैसा है, राइट? ये क्लाइंबर है या क्रीपर है, राइट? सो मतलब उस तरीके से they'll be able to observe and write their inferences. This kind of activity can also be conducted. Mathematics के साथ plant growth chart that can be made. Children, they'll be able to observe, they'll be growing a plant, and they will be observing the growth of the plant. They'll be measuring the height, the number of the leaves, and they'll be giving other observation if they are noticing. So this is how they'll be able to connect the same with mathematics too. Also, you can give different kinds of word problems to your students related to different arithmetic operations, like talking about deforestation, talking about the plantation, right? So you can design, you can develop your own question bank, own word problems also. Or you can ask your children to design their own word problems taking plants as a base, right? So you can conduct this kind of activity. And my lovely educators, if we talk about languages, we focus on students' academic vocabulary building too. So here are different words given: shallow, moist, right? Seedling, germinating, etc. So let the children, they understand the meaning of that particular term. For that, they can draw also, they can create the flashcards as you can see on the screen. Also, you can give them some sort of meanings to usko match karke banayenge, or they can develop their own meanings, and also how they are connected with each other, they will be able to write that, as you can see over here. So my dear educators, in literature, there is a poem, Spring is Here. I mean to say, when we are talking about the plants कब flowers कब bloom करते हैं, you can talk about spring, or maybe other season related poem to autumn से related कर सकते हैं, या मतलब कैसे भी आप किसी season को भी relate कर सकते हैं, if that is there in the syllabus. तो आप अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, पोएम को रिसाइट करें, अंडरस्टैंड करें, हु हैज रिटन द पोएम, डैफोडिल जैसे हमने बात किया कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनके ऊपर पोम लिखी गई हैं, कौन से फ्लावर्स हैं जिनके ऊपर सॉन्ग भी अवेलेबल हैं. यू कैन आस्क देम टू सिंग सॉन्ग्स आल्सो इन द क्लासेस. एंड एक comprehension form में आप उनको पोम दे सकते हैं. You can talk about different questions, right? And now this I was talking about it earlier. Now, the art of bark. This activity also you can conduct. You can ask your children to go ahead, go to the park, take paper with them, pencil, right? So that they can draw impressions of different leaves, different types of barks also. This is very interesting. Okay, bark, it can be smooth, it can be patchy, it can be bumpy, it can be multicolored, and it have different shapes and ridges on it, right? So it can be covered with moss also, lichens, fungi, insects, right? So you can ask them, check it out, the different kinds of bark that is available on different tree trunks, in the park, at school, maybe outside, right? So you can ask your children, be creative and find out what are the different kinds of barks available. So impression activity can be conducted, or if they can collect different kinds of bark and they can create their own scrapbook, that kind of activity can be done. Or they can click pictures and create their photo album, e-photo album also. Now, scavenger hunt activity. Ask the children to go just hunt for different kinds of flowers
इन द नेचर, और या आप उनको एक कार्ड दे सकते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट, एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, की नेचर में आपको क्या क्या प्लांट से रिलेटेड मिल रहा है, हाउ एनीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लांट्स। खाली प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स हैं, देखिए वो ब्रांच के ऊपर बैठे हुए हैं, वाटर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रास इज देयर, राइट, एंड द ट्रीज आर देयर, देन ब्राउन लीव्स ऑटम की याद दिलाते हैं, राइट, बटरफ्लाइज, स्प्रिंग में कैसे फ्लावर्स के ऊपर ऑल ओवर देयर आर बटरफ्लाइज, तो हाउ दीज थिंग्स दे आर related to the plants, they can find the connections with different things, or they can also make a list of the things available in the surroundings. So as per the different age groups, you can tweak the activities and give it to them. Now, let's extend their learning. So my dear educators, जैसे हम I guess fourth, fifth class में the students से talk about, they learn about different parts of the seeds. They talk about monocots, dicots. तो seeds के कौन कौन से part हैं? Seed coat की बात कर रहे हैं, embryo की बात कर रहे हैं. Let them draw the different internal parts of the seed. Let them talk about, like, can you explain what each part of the seed does? उसका क्या function है? Let them write about it. Now, I have also shared a kind of rubrics with you. You can share it with your children, right? Like if the children, the success criteria that we also talked about, I can identify the parts of the seed that will grow into a plant. मैं अपने आप कर सकता हूँ, me, or maybe with the help of a friend, or maybe with the guidance of a teacher. Like मैं किस level पर हूँ अभी. I can explain what a seed needs to, like if the seed needs to grow, तो what all things are required. मुझे पता है और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है, राइट, और मे बी आई कैन एक्सप्लेन व्हाट जर्मिनेशन मीन्स ऑन माई ओन विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, और मे बी विद द हेल्प ऑफ माई टीचर. नाउ से हिंदी की बात करते हैं. देखिए कितना कुछ है हिंदी में भी. हम हिंदी में आंखों के तारे, नेचर के बारे में बात हो रही. नेचर से हम क्या सीखते हैं, बर्ड से क्या सीखते हैं, ट्री से क्या सीखते हैं, तो वी आर रिलेटिंग द सेम विद नेचर. जगजीश चंद्र बोस, जेसी बोस की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था जिससे हम ये जान सके कि प्लांट्स दे हैव फीलिंग्स टू. सो उससे रिलेटेड आप कनेक्ट कर सकते हैं. खाली जगदीश जेसी बोस के बारे में आप हिंदी के पार्ट में नहीं पढ़ाएंगे, आप उसको साइंस के साथ रिलेट करेंगे, साइंस टीचर भी उसके बारे में बात करें, और टुगेदर कैन कंडक्ट अ क्लास. ओके, बोथ द टीचर्स एक साथ आप कंडक्ट करिए. हिंदी टीचर पढ़ा रहा है तो साइंस टीचर को भी क्लास में बुलाए, ताकि साइंस टीचर उनको समझा सके ये कैसा होता है, राइट. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी टीचर को नहीं पता है कि कैसे समझाना है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन, सी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड क्लास में, टू टीचर्स टुगेदर also can talk about that particular thing, right. फूल हमेशा मुस्काता, flowers हमें क्या लेसन देते हैं, what the lessons are there that we learn from nature, from flowers, right. You can talk about that. So this is the beauty of this integrated curriculum. तो बच्चे सिर्फ प्लांट के पार्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे, फ्लावर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जेसी बॉस ने इसके बारे में क्या इन्वेंट किया था, राइट. नेचर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, लाइक हमें क्या लेसन देते हैं. सो दिस इज हाउ द चिल्ड्रन दे विल बी लर्निंग. नाउ एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हम इस एक्टिविटी को कनेक्ट करेंगे. लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ पेयर्ड स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड यूपी, राइट. तो यूपी में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो दे आर नोइंग अबाउट, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू एक्सप्लोर अबाउट द प्लांट्स, द फ्लावर्स अवेलेबल इन द पेयर्ड स्टेट टू. अब मैंने जब गूगल सर्च किया कि कहाँ कौन कौन से फ्लावर्स अवेलेबल हैं, देयर आर नंबर ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल ओवर देयर. तो आप बच्चों को कह सकते हैं, दे विल बी एबल टू रिसर्च एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्लावर्स दैट आर अवेलेबल इन द अदर स्टेट, जो हमारे स्टेट में नहीं है. हो सकता है कि वहाँ के एनवायरमेंट, वहाँ की वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर वो फ्लावर्स अवेलेबल हैं. एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट ladies slipper orchid, that is the state flower of अरुणाचल प्रदेश. तो आप बच्चों को ये एक्टिविटी दे सकते हैं कि जो स्टेट फ्लावर है वहां का, दैट इज लेडी स्लीपर, आप उसके बारे में रिसर्च करके लाइए, वो कैसा दिखता है, लेडी स्लीपर क्यों कहा जाता है, उसकी शेप कैसी है, क्या है, तो वो रिसर्च भी करेंगे. आई मीन ऐसा काम नहीं देंगे जो सिर्फ बुक्स में लिखा है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. दे विल बी एबल टू गो एंड गूगल इट, रिसर्च द डेटा, ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको क्यों ऐसे कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये वहीं पर क्यों पाया जाता है, वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो कैसी है, सॉइल के बारे में बात कर सकते हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, कौन कौन से मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं. तो आप सोशल साइंसेस को भी उसमें कनेक्ट कर रहे हैं. इस तरीके का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आप बच्चों को देंगे करने के लिए. फिर देखिए आप इन्फोग्राफिक्स,
जब प्लांट्स की बात हो रही है, यू टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो, आईटी को इंटीग्रेट करके आप उसमें एक इंफॉर्मेशन और ग्राफ दोनों को मिलाकर इन्फोग्राफिक्स यू कैन आस्क योर चिल्ड्रन टू प्रिपेयर, राइट। या उनको आप एक डेटा दे देंगे पहले से ही रेडीमेड, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, यू डोंट वांट योर चिल्ड्रन टू गो एंड गूगल इट, आप उनको बोलेंगे इस डेटा को देखकर आप अपना एक इन्फोग्राफिक प्रिपेयर करिए, ग्राफ, मैथमेटिक्स भी आ गया उसमें, इंफॉर्मेशन भी आ गई उसमें, लाइक एंड उसको ब्यूटीफुली आपने प्रेजेंट भी कर दिया थ्रू वेरियस आर्ट फॉर्म्स. सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम. Now, picture prompt activity can be done. As I mentioned here, that LSRW skills we are enhancing in our learners, right? So, हम अपने बच्चों को different picture prompts related to plants, related to deforestation, right? Related to soil erosion, वो हम बच्चों को दे सकते हैं. And उसके बाद we'll ask our children कि आप इसके ऊपर अपनी you have to write about it, right? Or you have to speak about it. Jam activities करवा सकते हैं in classroom, और घर में करना तो you can ask them to record their videos. You can use different technology, tech tools also. Flipgrid is a wonderful tool. You can ask them to create their posters for media to create awareness about you see SDG 15, life on land, talk about deforestation, talk about soil erosion, talk about plantation. So these kinds of activities can be done. You can ask them to write blogs also, right? Email writing, letter writing on these particular topics that can be given. I mean, any kind of writing skill that you are doing in the class that can be related to the same topic as well. So my dear educators, so this kind of activity you can conduct in the class. Also, see now mind mapping, सारा कुछ आपने जो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सीखा है, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, प्लांट से रिलेटेड जो कुछ भी जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आप उसका एक ब्यूटीफुल माइंड मैप क्रिएट कीजिए और कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट कीजिए वेयर मोर ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन. सो दैट कैन बी इन एनी फॉर्म. आप पेपर पर ड्रॉ करना चाहते हैं, चार्ट पर ड्रॉ करना चाहते हैं, बड़े छोटे A4 साइज पेपर पर ड्रॉ करना चाहते हैं, और यू कैन वांट टू क्रिएट ई कोलाज, ई माइंड मैप, यू जस्ट गो हेड विद दैट. देयर आर नंबर ऑफ टूल्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल. एंड सी, इसको सोशल साइंस के साथ भी मैंने रिलेट किया है कि अब देखो बहुत सारी चीजें हैं. पौधों के लिए क्या है, बारिश चाहिए, पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, आप उसको रिलेट कर सकते हैं. कौन से एरियाज हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, कौन से एरियाज हैं जहां पर डिफोरेस्टेशन ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, कौन से एरियाज हैं जो कि फ्लावर्स के लिए फेमस हैं, नहीं, कौन से एरियाज हैं जहां पर फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है. तो इस तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, चैप्टर के अकॉर्डिंगली आप इसको मैप एक्टिविटी भी बच्चों को दे सकते हैं रिलेटेड टू द plants. So, my dear educators, conduct such kind of activities in your classes and enhance students' concept building. इस तरीके का आप हॉलीडेज होमवर्क, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दीजिए. अब आप सोचोगे कि इतना कुछ बोला है तो काम करेंगे क्या, करेंगे क्या, प्लांट को एक बेस लेकर बच्चों को एक स्टोरी रीड करने के लिए भी देंगे. बेस्ड ऑन दैट आस्क देम सम क्वेश्चंस, और जो उनसे पूछा है उसको एक इंफोग्राफिक की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए दीजिए. उनको एक माइंड मैप बनाने के लिए दीजिए. उनको एक इंडिया के या वर्ल्ड के मैप में रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट उनको फिल करने के लिए दीजिए कि पर्टिकुलर एरियाज यू नीड टू हाईलाइट, यू नीड टू कलर, राइट. और उनको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ जो है कैलकुलेशंस करने के लिए दीजिए, राइट, बेस्ड ऑन द प्लांट्स ओनली. उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एनहांस कीजिए. नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ आइडियाज आई हैव शेयर्ड विद यू. इफ यू हैव मेनी मोर, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सीखने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, बट द वीडियो I need to keep it short also. I have already discussed a lot, and see you soon in another video. For that, like, stay tuned, subscribe to the channel, and as you can see in the picture, adopt a plant. So that is the main just main theme, main objective. You have to share your children with your children. Don't only plant the saplings, but adopt them too. Give them names, take care of them till, I mean, because that is forever. अपने लिए नहीं कर रहे हैं, let's grow plant for others. So my dear educators, subscribe to the channel if you want to know more about such innovative strategies, and don't forget to share your valuable comments in the section below. Thank you. Have a nice day.